Hello, good evening, guys. Welcome to another episode of this podcast. 42nd match of the IPL, and it couldn't have been any other stadium rather than the Colosseum of Indian cricket, the Eden Gardens. Punjab Kings has managed to chase down 262 in 20 overs with 8 balls remaining and just 2 wickets. What a match, Krishna. What a match. ग्रेट मैच यार। हम कल बात कर रहे थे कि मतलब पंजाब और केकेआर का, मैंने बताया था ना, पंजाब इज एक्चुअली Yeah, प्रोड्यूसिंग yeah, ग्रेट गेम्स दिस सीजन एंड दे yeah, प्रोड्यूस्ड अ थ्रिलर अगेन yeah, प्रीति जिंटा वर्सेस शाहरुख खान, सैम करन वर्सेस श्रेयस अय्यर। जस्ट टर्न्ड आउट टू बी अ yeah, फैंटास्टिक अफेयर मैन। जय श्राह जिस तरीके के स्क्रिप्ट लिख रहा है ना भाई इस आईपीएल में। yeah, But yeah, yeah, we spoke about yeah, these things even in the last podcast. Honestly, we are going to see more of this in the coming future. I don't know, yeah, where the game's going or how interesting it is going to be, to see 200, 250, to actually get scored every now and then, because people are yeah. actually losing now a bit of interest and wanting to Yeah, see yeah, more of yeah, yeah, 180, yeah, 180 odd games where there is a tight yeah. finish, and there is even contest between bat and ball. But this literally is a joke, man. Ravi Ashwin goes on Twitter and he says, "Please save the bowlers." SOS, SOS message. Send an So, SOS message. Josh Butler says, "This is ridiculous. This is outrageous, etc." Well, even they are finding it very difficult to sort of digest. And obviously, yaar, for us watching it from the comfort of our homes, yaar, हमने को तो ठीक है यार. We are getting entertained, but at the same time, uh, Yeah. it also raises a lot of questions on the future of the game. But to be honest with you, when I was thinking about the KKR and the Punjab games, I genuinely thought it's Eden Gardens. It's going to be a cakewalk for KKR. They're going to dominate the power play. And the first 20 overs, I sort of figured that this is what's going to happen. It was a usual story. But then, the way Punjab played today, they've 16 years since the IPL. They've never managed to win a trophy. Why is it that Punjab Kings, despite being such a good team, only losing by close margins this IPL, has not been able to perform the way it should have? So I tell you what, see, Punjab Kings today have a world record to their name, having chased 262, but only their owners, of Punjab Kings are to be blamed for this plight of the franchise for not having won for 16 years now. So Mohit Yeah, Burman, who is the owner of the franchise, he owns 48% of yeah, the stake. He, in an interview with Forbes, he said that they were very mm, naive during the initial years, right? And the reasons mm, were many, because the mm, sponsorship was low, business model was not mm, set, there wasn't enough mm, money to sustain the team, and they didn't really mm, know how to market the product. They would tell mm, coaches, what to do, because there was a lot of money and emotion involved, and they did not spend much at the auction table as well, which caused discontent amongst a lot of coaches, saying that they uh, didn't really have the team to actually take them to mm, the playoffs. Now, starting with mm, Yuvraj Singh and Tom Moody right from mm, 2008, this team has had mm. different captains and coaches almost every other year. And this chop and Wow. change has actually Yeah, not allowed for a strong core. And in so yeah, many years, they qualified only once in semis in 2008 and once in the final in 2014. And yeah, they would always look for, short-term quick fix. But in the last 2 years, what has happened is that they've stopped being emotional. They've looked for mm, new talent. Let's say, for example, mm, so Sharma and Shashank Singh yeah, started yeah, thinking long term and let mm, professionals do their job. And this new yeah. approach came together today, to sort of deliver a world record. So In fact, yeah, yeah. So in other sorry. words, I In think fact, it's yeah. important that you change the approach, because it's not just a sport where only a team plays, but I think the critical role is that of the management, and it has to be an year-long effort and not just a Yeah, 2-month effort. yeah, yeah. In fact, Chris Gale had once mentioned that after Mayank Agarwal was not picked by Punjab Kings, despite being there with them for a long time, he said there is a lot of chop and change in that team. Their playing 11 was never decided. You play well, the team changes. You play again, the team changes. So, I think someone coming that, like Chris Gale saying that, who's played so many international T20, speaks volumes about what Punjab was going through. But hopefully, after tonight's victory, they have their revenue sorted and players sorted. We'll quickly talk about the match. Sunil Narayan. Sunil Narayan has been the best found of this IPL. Not this IPL, but the best found of T20 cricket throughout.
It's amazing I that will you're talk talking about about him as a 20-year-old kid has been the best found. It's just amazing, you know. That's that's how he's reinvented himself. And it's yeah, so important in today's day and age to yeah, keep reinventing yeah, yourself to be yeah, relevant. And I think Sunil yeah. Narayan has done a fantastic job of that. Um, I think credit to Gautam Gambhir. In 2017, when Gambhir came back to KKR, they said that, he gave me the confidence to bat at the top order. And Gambhir said this. He's like, out of 14 matches, तो शायद 4 मैच में अच्छा खेलेगा. लेकिन वो जो 4 मैच में तू pressure डालेगा ना दोस्त, that would be good enough for any team to sort of be under the pump. Uh, Coming down to the batting order, Phil Salt. Oh my God. Phil Salt has now come to the party. He doesn't want to be alone, stranded on one side. I think he batted magnificently. Venkatesh Iyer played a good role. Shreyas Iyer, surprising, 10 balls, 28. You He's spoke knocking on the about door Phil of the Salt. selection. You spoke about Phil Yeah, Salt. Just to add to that, in the 2024 auction, he wasn't even yeah, selected. You know, he didn't, and he is here in this KKR setup because yeah, Jason Roy is not here playing because he got injured. Imagine. yeah, yeah, So sometimes destiny has its own role to play. Venkatesh Iyer was impressive, yes, but I think I mean the middle order, sort of didn't really have much to do because it was just mm, set up right there at the top mm, of the order, by mm, Sunil Narayan mm, and mm, Phil Sort, and I think mm, it was carnage. I mean, whether you talk about the KKR innings or the Punjab innings today, I mean, 262 being chased, yeah, yeah. I would not really want to That's be a bowler. I really don't want to pick up the ball. I want a bat every time I go on to play cricket on the field. That's exactly what I want. I feel a little bad for Angrish Raghuvanshi. I was looking forward to sort of but I think they Angrish Raghuvanshi ना ऐसे बच्चे की तरह बोलते बेटा अभी थोड़ी देर रुक जाओ अभी देखो थोड़ा पापा लोग खेल रहे हैं देखो कैसे खेलते हैं ये लोग. So I think I felt a little bad for Angrish Raghuvanshi. Coming to the Punjab bowling, I don't see anything that's below 8 except for Rahul Chahar. Everyone else is just gone for a lot of runs. Now, we come back to the batting that has made all the difference this match. We are going to start with Prabh Singh. Prabh Singh is a lad who plays for Punjab, comes from a sports family, lives in a joint family. And by sports family, I mean his father used to play handball. His sister used to still plays handball for national level. He has a brother called Anmol Preet Singh who plays for Sunrisers. Whenever these boys wanted to knock a few balls, their respective fathers would throw it to them. And if they got tired, they started playing in the colony. Someone who's been mentored by Yuvraj Singh, Krishna, Prabh Singh, Abhishek Sharma, and Shubman Gill. इन चारों को इनफैक्ट बिहाइंड द सीन्स ट्रेन किया है यूवीपा ने. एंड कोविड हुआ, इन चारों ने यूवीपा को कॉल किया कि भाई प्लीज हमें थोड़ा हेल्प चाहिए. यूवीपा ने कहा मेरे घर आओ, मैं 5 हफ्ते का कैंप लगाऊंगा. और रोज सुबह इनकी ट्रेनिंग सेशन शुरू होती थी, शाम में पूरा उनके घर में होम थिएटर पे लगा के एकदम वीडियो देख के कि हाँ कहाँ पे क्या करेक्शंस करना है, वो सारी चीजें हो रही हैं. प्रॉपर एनसीए स्टाइल विद शीट्स एंड रूटीन एंड अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. यूवीपा Yeah. was actually a strict coach, and now we are Yeah. all watching them come good. And UEPA, salute. There's something about Yuvraj Singh in Indian cricket, right? Everyone Both Harbhajan just Singh also, yeah. looks at. Harbhajan Singh is Yeah. also contributing quite a lot, and both of these players, in fact, are developing quite a lot of Punjab players, and they are coming in and playing really well, for the Punjab Ranji Trophy, sorry, Ranji team as well. So both of them, in fact, are contributing and behind the scenes, not taking any credit, etc., etc. चुपचाप अपना बढ़िया जैसे Dravid काम करता था अंडर 19 में, पैसा काम कर रहे हैं. So is Irfan Pathan, by the way. Irfan Pathan is one of those who found Rasikdar at one point in time. In fact, Swapnil Singh yesterday pays a lot of respect to Irfan Pathan that he's the one who's kept me mentally sane while I'm batting. But I'm going to talk about Jonathan Mark Bairstow. Okay, Jonathan Mark Bairstow. There are two things that I want to talk about him. One, someone needs to give you that guy a bat sponsor. And the second thing that I've learned about him is that you do not poke the bear. Okay, and I'll give you examples. There was a test match in Edgbaston. विराट कोहली खेल रहा है, विराट कोहली बिंग, विराट कोहली गोज को स्लेज करता है. जब वो स्लेज नहीं कर रहा था, उसकी एवरेज स्ट्राइक रेट 21 की थी. उसने स्लेज किया, वो 150 की एवरेज स्ट्राइक रेट पे आ गया और उसने 100 रन बनाया उस मैच में. इस टाइम ट्रेवर बेलिस, OBE, द कोच फॉर 2019 इंग्लिश वर्ल्ड कप विनिंग टीम, वो उसको
वो लाइव कमेंट्री में बोलता है, वो राइट शोल्डर के पीछे जो बंदा बैठा है ना, वो नाखुश है उसकी, उसको बिठा दिया, वो बोलता है मेरे को खेलने का है, मेरे को खेलने का है, मेरे को खेलने का है। दे अगेन पोक द बेयर. Johnny Bairstow has been in India longer than Lord Mountbatten. One day World Cup, IPL, Test match, and today I think he has just come out and blasted everyone. I have a humble request. Please do not poke the bear. Johnny bhai, go back. Johnny bhai, go back. And Kohli and strike rate, never ending affair. Guys, look in comment section for Go for him. it. Ah, then we come. Even Riley Russo found form today, man. I think हाँ, उसको भी बोला and होगा ट्रेवर बेलिस ने कि I was तेरे को भी really बिठा देंगे shocked यार and दोस्त. surprised to see. मतलब वो आ गया, मतलब वन डाउन आ गया यार. मतलब मेरे को लगा राइली हाँ. मुसो वन डाउन, ये खेल रहा है, हाँ. ये खेल रहा है. पंजाब की टीम से But फिर भी yeah, खेल रहा है. people have really bashed Sam Curran quite a lot on television, हम्म. saying that he doesn't know what he's doing. He's also a completely clueless captain, this and that. Simon Doan on Crickbus today, he said that I apologize. Sam Curran knows everything what he's doing. I'm no one to say anything to Sam Curran. They have chased down 262. I've now lost faith in this game. Because that is what is happening. That is what is happening. Yeah. Because I was discussing this, Yeah. also with Ankit yesterday. That, oh my god, this game is actually getting transformed very, very, very quickly, and in the next 3 or 4 years you're actually going to see even 400 get chased down. Yeah. Even Yeah. 400. Imagine what it Yeah. is going to be like to be a Yeah. bowler. आज तूने क्या किया? अच्छा डाला आज, मैं 4 ओवर 80 रन, बहुत बढ़िया किया बस. What I feel bad about the bowlers is, I was reading Mitchell Stark को सब पूछ रहे हैं कि मिचेल स्टार्क इतना महंगा प्लेयर है, कैसे पिट रहा है. बोलता है बिकॉज मिचेल स्टार्क के पास एक बहुत अच्छा लेंथ बॉल है, एक बहुत अच्छा इन स्विंगिंग यॉर्कर है, एक बहुत अच्छा बाउंसर है. लेकिन T20 में सब नहीं चलेगा. एक स्लोअर वन चाहिए, और अलग अलग तरह का स्लोअर वन चाहिए. एक नकल डालो, एक बॉल बाउंसर स्लोअर वन चाहिए, एक ऐसा स्लोअर वन चाहिए, एक वैसा स्लोअर वन चाहिए. तो it's becoming increasingly difficult for bowlers to, I mean, if you had to switch formats, वो बेचारा T20 खेलने के लिए अलग बॉलर बनेगा, इसके लिए अलग बॉलर बनेगा. The Absolutely. pitches don't support the bowlers at all. The grounds are bloody small. Okay, you bowl a yorker, someone's going to ramp it over your head. A Absolutely. batsman can be a lefty and change to a righty and swap it, but you can't change hands. Absolutely. And And now there is due. what they are going to in fact see, even in the World Cup now, they are getting drop-in pitches from Australia. They are getting drop-in pitches from Australia in New York. You are only going to see the same bounce. वो आ रहा है एकदम बढ़िया. ट्रेविस हेड आएगा, फिर ले जाएगा भैया. मेरे को समझ, इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया से ही पिच लेके आ रहे हैं ये लोग यार. ऑस्ट्रेलिया मतलब यार, इनकी कंडीशंस भी वही हो जाएंगी यार. तो सोच रहा है पिच यार कंडीशंस भी अच्छा, फिर ले अच्छा खासा जाएंगे. सब लोग, नहीं मैं बोल रहा हूँ अच्छा खासा मिस्टर विजुर को वापस भेज रहे थे, उसको नहीं जाने दिया. बेस्टो को वापस भेज रहे, उसको नहीं भेजा. ट्रेविस हेड को भी नहीं. एक अच्छा है ग्लेन मैक्सवेल चला गया, एक अच्छा है कि बता वो भी फॉर्म में आ जाता. तो यहाँ हमारे प्लेयर बेचारे फटीक के बाद, आईपीएल के बाद वो वर्ल्ड कप खेलते, ये लोग फॉर्म में. बट यार इतना रन नहीं होना चाहिए. रन मतलब क्या. ठीक है अभी. um, हर मैच चेन्नई में खिलाओ. सुनील यार, हर मैच चेन्नई में खिलाओ ना. एवरी मैच शुड हैपन इन चेन्नई. पर आजकल चेन्नई में भी 200 बन रहा है. प्रॉब्लम ये है, 180 वाला आई गेम भी डिडंट फिर वांट टू ठीक है, रिमाइंड यू. देख सकते हैं. I didn't want to remind you. I'm just saying. I do want to remind you. I'm just saying. But standout bowler सुनील नारायण, 4 ओवर 24 रन, 1 विकेट, 6 का इकोनॉमी. ये आदमी, ये अलग देश, ये पता नहीं किधर से है यार ये इसको. पता है, ये वो वाला कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है जो ठीक 9 बजे आ जाता है, 6 बजे चले हम्म. जाता है, 9 घंटे में हम्म. अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल लेता है, और बाकी लोगों को हम्म. बोलता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें लेट रुकना है तो लेट रुको, लेट आना है तो लेट रहो, मुझे कोई चक्कर नहीं है, मैं अपना काम करेगा, मैं जाएगा, मेरा बॉस मेरे से खुश है. बस. तेरे को एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ सुनील नारायण की. ठीक है. 2011 या 12 की बात है. तो इनका ना एक केकेआर का एक ऑक्शन स्ट्रेटेजी था, उसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर मतलब अगर उस प्राइस तक आ गया प्लेयर और उसके ऊपर चला गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, हम नहीं लेंगे. इन्होंने मुंबई इंडियंस से लड़ाई करके सर्किट ब्रेकर तोड़ा. और इनका जो स्काउटिंग हेड है, आई थिंक, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट श्रीकांत, श्रीकांत इज स्काउटिंग हेड. उसने उसको मेलबर्न रेनेगेट्स में कहीं तो देखा था ओपनिंग करते हुए, उधर भी वो खेला नहीं कुछ.
उसके बाद फिर इसको बोला नहीं तू खेलेगा, तू ओपनिंग करेगा, ओपनिंग करेगा, ओपनिंग करेगा, करवाया करवाया, अभी पेल रहा है सबको. बट थैंकफुली ये सेड आई हैव नो प्रोपोजिशन टू बी इन द वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप. तो वहां हम लोग एटलीस्ट सुनील नारायण के But सामने क्या things can स्ट्रेटेजी change. बनाए उसमें हेडेक नहीं है. But हैं? things can change. But things can change. अभी वो नहीं आ सकता, अभी वो बोल दिया उसने, अभी नहीं आ सकता, वो अभी आएगा तो राइट ही बैटिंग करना पड़ेगा. भाई जब शरद जयसूर्या 4 बार रिटायरमेंट से वापिस आ सकता है तो ये भी हो सकता है मेरे भाई. अरे ये भी हो सकता उसके लिए है. शाहिद अफरीदी जब 4 बार रिटायरमेंट से वापस आ सकता है तो ये भी हो सकता है. मेरे को लगता है मेरे को और एक चीज याद है, बेयरस्टो ने जाके गंभीर को बोला होगा, पता है गौतम गंभीर को, सो डू यू स्टिल बिलीव इन प्रोसेस और ओनली विनिंग और लूजिंग. कि अभी प्रोसेस प्रोसेस फॉलो करना है, कि अभी तू भी मानता है हम भी मानते हैं विनिंग इज इंपॉर्टेंट, you don't follow the process. I think after today's game, Gambhir is right, yeah. I think after today, he's right. Like, what process do you follow in this? There is no process. There is either winning or losing. Yeah, what else do you play the sport for? What else do you play the game for? You don't want to, sort of lose any game that you play, any game, यार, for that matter, and you want to be competitive, right? मतलब sport इसलिए तो होता है. हम लोग यार इंडिया मतलब वर्ल्ड कप में यही चीज बोल रहे थे, बहुत सारे लोग, Hmm. बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार इंडिया 10 मैच जीत रहा है, 10 मैच जीत रहा है, ऑन अ ट्रॉट जीत रहा है, माय गॉड. एक वो हार जाए, बस एक हार जाए और फिर उसके बाद ना सब कुछ सही हो जाएगा, फाइनल तक वो पहुंच जाएंगे. बट थिंक लाइक यू आर एन इंडियन क्रिकेटर है. मान ले तू शुभमन गिल का जगह रहता, ठीक है, तेरे को क्या लगता है कि तू किसी भी मैच में कोलैप्स चाहता? तेरे को क्या लगता है कि तू किसी भी मैच में मतलब एज अ हार लेके जाना चाहता होटल में, कि नहीं यार आज अच्छा नहीं एक कॉलर अप है ना मेरा, फिर शुभमन गिल. हाँ. नहीं, आई no one wants to lose a match, but I mean, I'm just talking about complete T20 right now, yaar. What strategy do you use here? Like, again, you're just helpless. अबे रविचंद्र अश्विन बोल रहा है मेरे को हेल्प चाहिए, वो आदमी कोई आर्गुमेंट हारता नहीं है. He's asking for an SOS plan and he's genuinely right. I mean, रविचंद्र अश्विन ना कभी ऐसा बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी बहुत वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप डालने की कोशिश कर रहा था जब उसको रन पड़ रहे थे यार. If a bowler like Ravichandra Ashwin, who's so tactful, has to change, then I think the T20 game is just taking it. I don't know next. But एंड इसमें क्या होगा ना अभी अभी पांच. इज नॉट जस्ट टैक्टफुल, वो अपना चेंज करता रहता है यार. वो ऐसा भी नहीं कि आप एक्शन चेंज किया था बीच में उसने. विथ सो मच डेटा अराउंड, ठीक है, सबको मालूम है कि मतलब उसका क्या कहते हैं, कटर कौन सा आने वाला है अभी, वो उसका व्हाट इज दैट यार, दी आर्म कैरम बॉल नकल, कब हाँ. आने वाली है, कैरम किस बॉल टाइम पर. पे वो डालने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ. ठीक है, लोगों को हम्म. पता है. एंड हेंस ही कीप्स चेंजिंग दैट. मतलब वो कभी अपना रन अप चेंज करेगा, कभी ऐसे हाँ करके हाँ. मतलब उठ के आएगा तो कभी फिर रुक जाएगा. हाँ कभी कभी रुक ऐसा रुक जाएगा, गया. फिर ऐसा डालेगा. 2013 की फाइनल फाइनल बॉल में जो उसने ऐसे करके रुक के फिर उसके बाद डाला ओके. था. उसमें गट्स है भाई, उसमें गट्स है और उसने बहुत टाइम पहले सोच लिया था कि ये गेम ऐसा होने वाला है. ठीक है यार, इतना स्टैट्स वैट्स कितना स्टैट्स इकट्ठा करेगा आज केकेआर भाई, कितना स्टैट्स इकट्ठा करेगा आज. स्टैट्स वाले की लग गई है भाई. स्टैट्स वाले की लग गई है, स्कोर कार्ड वाले की लग गई है. वो कहेगा कि भाई मैं कितना गिनेगा, और 180 तक तो वो ठीक है, अभी तुम 260 वाट बना रहे हो तो मेरे को तो भाई 50 ओवर का पगार चाहिए. वो दुश्मन था चमीरा, इतने टाइम बाद कमबैक कर रहा है. लास्ट टाइम 2016-15 नहीं कब खेला था, उसको पिटवा दिया उसको 16 उसको की. भाई गौतम गंभीर पता है कहाँ से लाया? उसको पता है कहाँ से लाया? लखनऊ से. वो अच्छा खेल रहा था वो लखनऊ में बेचारा. उसको के यार लेके आके जो हालत हुआ है उसका. वो कहे भाई मैं कभी ईडन में दोबारा नहीं खेलेगा. लखनऊ में बढ़िया था, स्लो पिच पे खिला रहे थे, मैं वहां पे स्लोअर वन कटर डाल के मतलब अपना बढ़िया सा 2 वक्त का रोटी कमा रहा था. तुमने यहाँ पे लेके आए और पूरा मेरा गेम खराब कर दिया. अभी अभी स्टार्क चुपके से जाके पूछेगा गंभीर भाई मेरा फिंगर इंजरी ठीक हो गया ना अभी तो, अभी देखो. उसको रखना चाहिए था आज के मैच में यार, वो पावर प्ले में तुझे काम तुझे आता. तुझे वो याद है? तुझे वो याद है वो गंभीर के साथ जो एक बंदा बैठा था ना ऑप्शन ऑप्शन टेबल पे, जब गंभीर ने हाँ 24 करोड़ पे लिया था, हाँ वो ऐसे देख रहा हाँ. था कि पागल बना दिया मेरे को. 24 करोड़ पे तुमने स्टार्क लिया है. वो वहां से देख रहा है आशु भाई को. आशु भाई कह रहे हाँ बढ़िया चिपकाया मैंने तुमको, ये लो. और खुद अजमतुल्लाह उमर भाई लेके चला गया. ऑप्शन बढ़िया होता है, पैसे है कुछ भी करो. बेटर ऑप्शंस देन पीपल हु एक्चुअली आर डूइंग इट सिंस 2008. ठीक है. या आशु भाई मतलब एंड वैसे उस लेवल का सोचते हैं. एंड KKR has so much of auction practice कि they took a software from Chennai and somewhere and they did auction practice. कि हाँ. मॉक ऑक्शन करते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें. मॉक ऑक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे.
फिर एक गांगुली को निकाल दिया, गंभीर को ले आया, उसका थोड़ा बहुत चेंजेस आया, लेकिन ठीक है अभी। आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इफ वो एवरीथिंग वाले बॉइल्स फेज में डाउन टू बोला है दैट। गंभीर ने, वो वाले फेज में बोला है गंभीर ने. So when Ganguly was representing Pune some या Warriors, या ठीक है, and या they were playing for KKR, so we thought that the या crowd is going to get divided because he या was Prince of या Kolkata. या But a lot नहीं of बट people came to me and he said कि यार नहीं, KKR अपनी टीम है, हम दिल से सपोर्ट करेंगे आपको. हाँ, क्योंकि उनको जीतना था कृष्णा। उनको चाहिए, और यही, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनका जो सीईओ है, अभी एमडी है, वेंकी मैसूर, उसने बोला कि आई टुक द रिस्क बिकॉज आई थॉट पीपल वुड वांट अ विनिंग टीम रादर देन अ हीरो। और भाई गौतम गंभीर एज अ कैप्टन हैज वन 56.55 मैचेस फॉर केकेआर, हाईएस्ट। वो ऐसे ही नहीं गुर्राता है कि प्रोसेस नहीं, विक्ट्री विक्ट्री। भाई वो टीम में क्या, वो टीम में क्या स्ट्रिक्टनेस रहेगा ना, गौतम गंभीर जीतने का है, जीतने का है, जीतने का है, चंद्रकांत पंडित जीतने का है, जीतने का है, जीतने का है। और फिर अभिषेक नायर, मैं 10 लोग को जीता है, तुम लोग को भी जीतने का है, जीतने का है, जीतने का है। Bro, but all इट्स these people, we were talking about Chandrakant Pandit, Abhishek Nair ने भी बहुत ज्यादा खतरनाक काम किया है यार. दिनेश What he's कार्तिक, done with DK, दिनेश कार्तिक को रिवाइव किया है उसने। रिवाइव किया है भाई उसने, मतलब all these three या players. I mean, it's a या fantastic mentorship core here. या आई थिंक दे ऑल, एंड चंद्रकांत पंडित ऑब्वियसली मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जिता के आया है, कोई छोटी बात नहीं है, चाहे आप जो भी उसके मेथड हो। और एंड्रे रसल ने बोला है कि एक टीम में आपका कोच होता है, उसकी एक सर्टेन स्टाइल होती है, आपको अडॉप्ट करना होता है। आप ये नहीं कि आईपीएल में आओ पार्टी करो यॉट में ये वो। हाँ, ठीक है एनी टीम, बट some people are really serious about winning a cup, and that And is partying KKR. at And and partying at everyone. this is a disciplined team, and that's what Gambhir's biggest regret is, right? He could not join the army. That's what he said to Cyrus Barucha once. So yeah, it's a proper team which lost today. Uh, okay, I think that's about it. Uh, Tomorrow's match is going to be very very interesting. I think Which it's is it's Delhi it's going to take Capitals a lot of versus uh, Mumbai yeah. Indians in Delhi. Delhi versus Mumbai, Krishna. Delhi versus Mumbai. Again, I am from Mumbai. I support Mumbai. You're from Delhi. You support Delhi. आज बारिश, कल दिल्ली जीत जाएगा। आज फिर से बारिश हुआ है. जब पिछला बार बारिश हुआ था तब दिल्ली जीत गई थी, आज फिर से बारिश हुआ है. और इस बार तो अरे ड्यू भी भाई नहीं जब, है. नहीं भाई जब पिछला बार बारिश हुआ था तो 8-9 विकेट से हराया था राजस्थान ने उनको, मुंबई को। वो बेचारा ड्यू के चक्कर में खेल रहा था, बारिश आ गई, बोला ड्यू नहीं होता तो बारिश आ जाएगी। बट आई थिंक दिल्ली विल विन टुमारो। दिल्ली हैज द मोमेंटम, एंड मुंबई इंडियंस विल And नाउ Mumbai आई Indians probably has go to, Hardik Pandya. yeah. Delhi. So I mean, I think tomorrow is going to be Chandni Chowk with paratha and all of that. I think वहाँ पे team bonding होगा थोड़ा, hopefully. It's going to be samosa And versus yeah, vada pav. who are you calling a vada pav? I am Hello. not calling anyone a vada pav. Please, Okay, in the okay. No, comment you just section, said people, samosa. please. It was not me. Yeah, he's not talking about a particular player. And if you think you are thinking about that player, that means you are wrong. So let us know in the comment section if you are thinking about that player. Anyways, hope to see the best. Hope to see Rishabh Pant back in form, a Hardik, Rohit Sharma back in form, a Hardik Pandya also back in Rohit form. I Sharma is think, already in form. Hey, by the way, I've heard except Joy that Bhattacharya. Ajit Joy Agarkar, Bhattacharya doesn't feel that. but I've heard that Ajit Agarkar is also in Delhi. Rohit Sharma and Ajit Agarkar have met already. रोहित शर्मा ने रोहित शर्मा ने बहुत क्लियरली बोला है, जब तक मैं या बीसीसीआई का स्पोक्स पर्सन एक कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, मत मानना। उसने बोला वो दुबई में गोल्फ खेल रहा हाँ, है, राहुल टीम नहीं द्रविड़ अपने आएगा. बेटे को खेल वो रहा है। उसने टीम के बारे में बोला है, पर अजीत अगरकर इज इन दिल्ली and he's going to meet Rohit Sharma, and they are, in fact, I think they've already finalized the team for T20 World Cup. This is हाँ हाँ, inside अब news. तक तो Inside आई news. आई थिंक, हाँ अब तक तो यार डिसाइड कर भी लेना चाहिए। अब तो फर्स्ट में भी आ रहा है, मतलब कब तक, लास्ट मिनट पे 12 बजे भेजोगे टीम आप? ईमेल नहीं चला तो आउटबॉक्स में फंस गया तो अगले दिन अरे आउटबॉक्स में फंस गया भाई ईमेल, सॉरी Dear सॉरी, ऐसे ICC, थोड़ी होगा। we regret your delay. प्लीज एक्सेप्ट अ सिंसियर अपॉलजीज। इसमें विराट कोहली का नाम नहीं आया, डाल डाल प्लस प्लस। विराट कोहली, सॉरी सॉरी, भूल गए हम लोग अरे थोड़ा। ले ले, इसका प्रमोशन भी नहीं होगा फिर गेम का. ले लो, उसको लेना ही पड़ेगा भाई. सीसी में जयशा को रखना भूल गए हम।
Anyways, this will continue. We're very excited about tomorrow's match also because it's going to be Rishabh Pant versus Rohit Sharma for me tomorrow. मजा आएगा. The मजा other आएगा. match is Sanju Samson versus KL Rahul at अदब से हराएंगे एक आना. कल है. हाँ, कल 2 है. Oh, hi, LSG is on 2 Chennai Fire victories. यार. They're on fire. भाई उधर भी ऑस्ट्रेलियन गौतम गंभीर बैठा है, जस्टिन लैंगर बुरी आंख वाला. वो छोड़ेगा नहीं भाई. वो भी फुल ऐसा विराट कोहली इज द बेस्ट, गो टू विन विन. वो भी ऐसा एकदम फुल यार, तू को नहीं मारेगा मैं मुक्का मारूंगा टाइप्स, अग्रेसिव. बट अच्छा होगा यार तो ये यार गेम. आई थिंक एलएसजी वर्सेस राजस्थान इज वेरी कट टू कट. ये गेम देखने में होपफुली मजा है. टुमारो is 100%. the second game is going to be really good here for sure. 110%. ये वाला पहला वाला मैच थोड़ा वन साइडेड हो सकता है if Mumbai get going or even Delhi for that Yeah, matter. If yeah. JFM gets going, oh my god, वो भाई अलग एफएम मजा आएगा भाई. JFN. ऑर्गेस्मिक है भाई. वो मैंने ऑर्गेस्मिक. बोला मैंने मजा. बोला था भाई, वो अलग एफएम है. वो खतरनाक बैट्समैन है भाई. एंड्रू नोकिया को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो फिर मतलब उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं पता नहीं विक्ट्री भाई. किसका होगा. उसको भी नहीं पता कि वो क्यों है यहाँ पे. क्या है मेरा रोल. मैं आता हूँ, रन खाता हूँ, चले जाता हूँ. वो क्यों खिलाते हैं उसको, मेरे को समझ नहीं आया. साउथ अफ्रीका में लोग मेरे से डरते हैं, यहाँ पे ये उल्टा होके शॉट मारते हैं मेरे को. वो अच्छा खासा होता है. Great. इंडियन बॉलिंग के साथ जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, उनको सीन नहीं है. वो अच्छा हाँ खासा एक मतलब और मतलब क्या कहते हैं, एक एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं. उनका बॉलिंग ठीक है यार, हाँ, इतना बुरा नहीं है. वो थोड़ा सा स्लो डाला एंड्रिक ने. वो स्लो डालेगा नहीं ना साउथ अफ्रीका ने. मैं तो एलन डोनाल्ड, मैं तो वाइट अरे लाइट आता नहीं ठीक है उसको डाल देंगे. स्लो डालने. वो ऐसे ही इतना उछल के आता है कि मतलब अपने आप ही तेज डल हाँ, जाता है. वो डालने की भी कोशिश करता है ना स्लो, अपने आप ही इतना उछल के आएगा कि वो मोमेंटम के साथ सीधा तेज आएगा. और वो सोच के आया, बोला तेल लेने गया T20 वी20 था, पाटा विकेट पे नहीं खेलेगा, मेरे को टेस्ट मैच खेलने में लेंथ प्रैक्टिस करता हूँ. सीख गया. वो सीख जाते देखते हैं. ओके मेरी कोई बात नहीं, ऑन द लेंथ भाई. Great. Anyways, thank you so much for joining us on this podcast. It's been an absolute pleasure. Thank you for your love on Instagram. We are also on Facebook. We are absolutely on YouTube. Please like, share, subscribe. And we are also on X, the Twitter, other name. Hey, by the X, way, we've not Twitter. crossed 1300 on our 1350 on our Yes, Instagram. So thank you so much. yes. Thank you very much. All the 1350 of you. Wow. And Seriously. And and plenty more to come here. Obviously, yes, matlab yes, please send it to your friends. They will think you're funny and you have cricket 13.5 intellect. million. 13.5 million is our long-term vision. Acha. Okay. So guys, please sound intellect in front of your friends by sending them our reels, because we talk cricket very, very seriously. Great. Very Thank you so much, guys. Have a good night. good.